And on the behalf of the School of Sciences, I welcome you all on the International Urdu Science Conference 2024. I firmly believe that conferences are a great medium to bring together people who think, believe, cherish, and strive for science, and to amalgamate their ideas in order to make the society a better place to live through science. So, as we move further with the program, I request our Chief Patron and Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan sir, to kindly take upon the dignitaries to the dais. The dignitaries for today's event are the Chief Guest for today's program, Professor Baswadkar Jagadishwar Rao, the Honorable Vice Chancellor of University of Hyderabad. Our keynote speaker for today, Professor Ahmad Kamal, Senior Professor Emeritus BITS Pilani, Hyderabad. Our patron, Professor Ishtiyaq Ahmed sir, Honorable Registrar, MANUU. Our patron, Professor Salman Ahmed Khan sir, Dean, School of Sciences, MANUU. Our convener, Dr. Salahuddin Syed, School of Sciences. Our co-convener, Dr. Majid Ali Chaudhary, Department of Mathematics, School of Sciences, MANUU. Thank you, sir. As per the MANUU tradition, we start every program with the recitation of Quran. Thereby, I call upon Anzar, Research Scholar, School of Sciences, to recite few verses from the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Very good morning to all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ترجمہ: اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑی سے، یعنی جمے ہوئے خون سے. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. انسانوں کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. خواتین و حضرات، آج کی صبح انسانی تاریخ کی سب سے روشن اور تابناک صبح ہے. آج کا انسان آسمانوں میں سفر کر رہا ہے اور خلاؤں میں خیمہ زن ہو رہا ہے اور قدرتی وسائل سے آج اپنے لیے سب کچھ بنا رہا ہے. اس برق رفتاری دور اور عالم کائنات نفسی میں مستقبل کی وکالت کون کرے گا؟ خواتین و حضرات، اس برق رفتاری دور میں بین الاقوامی اردو سائنس کانفرنس 2024 کا موضوع سائنس پائیدار مستقبل کے لیے منتخب کیا گیا ہے. یہ موضوع اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ملک کے معمار کو افکار صالح دے گا اور ایک پائیدار مستقبل کی خوبصورت راہ ہموار کرے گا. بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، کچھ ایسا کر کے چلو یا کہ صدا یاد رہو. خواتین و حضرات، اب آئیے خوبصورت نظم سماعت کرتے ہیں. ایک ایسی نظم جس میں اس ادارے کے فلک بوس عمارتوں کا تذکرہ ہے اور مادر دستگاہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے قیام کے بنیادی مقاصد اور اس کے اغراض پوشیدہ ہیں. میں IMC ٹیم سے درخواست کروں گا کہ مانو کا خوبصورت علمی ترانہ پیش کریں.
یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ علم و کمال فضل و شعر و شعور تک پھیلی ہے دل نواز مہک دور دور تک، ملتا یہاں نصاب ہے سارے جہان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ ہر نقش و رنگ و بو سے کرو اپنی گفتگو، آزاد درسگاہ کی ہے یہ بھی جستجو، سب فاصلہ مٹاتے چلو درمیان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ غرب و جنوب سے ہو کے شرق و شمال سے آگے بڑھو خیال ملا دو خیال سے، چرچا ہو کائنات میں ہندوستان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ فصل صدا بہار سے بستی بسی رہے، مل کر دعا کرو کہ یہ کھیتی ہری رہے، سایہ رہے سروں پہ کسی سائبان کا، آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ Now I would request Kashav Jahan,
Azmat Begum and Afifa Fatima from BSc to come forward to present the token of gratitude to our delegates. I would now humbly request our Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan Sir, to present a token of gratitude to our Honorable Chief Guest, Professor B.J. Rao, Vice Chancellor of University of Hyderabad. Please give a huge round of applause. मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा और इल्तिमास करूंगा प्रोग्राम के कन्वीनर प्रोफेसर सलमान साहब से कि आज के इस प्रोग्राम के कीनोट स्पीकर जनाब प्रोफेसर अहमद कमाल साहब को टोकन ऑफ लव, शॉल और गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल करें। Thank you, sir. I would also request the Dean's School of Sciences, Professor Salman Ahmed Khan, to present token of gratitude to our Honorable Vice Chancellor. Okay, great. That's good. मैं गुजारिश करूंगा कन्वीनर माजिद सर से कि हमारे स्कूल के डीन सलमान सर को टोकन ऑफ लव, शॉल, मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। मैं इज्जत माब शेखुल जामिया साहब से इल्तिमास करूंगा कि हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर सलमान सर को शॉल, मोमेंटो और टोकन ऑफ लव दे के उनकी हौसला अफजाई और पजीराई करें। मैं एक बार फिर अदबन इल्तिमास करूंगा इज्जत माब शेखुल जामिया साहब से कि डॉक्टर माजिद सर को शॉल, मोमेंटो और टोकन ऑफ लव दे के उनकी हौसला अफजाई और खूब पजीराई करें। जोरदार तालियों से इस खूबसूरत मंजर को अपनी निगाहों में कैद रखिए। ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तलबे मानू अपने दिल की अम्मी गहराइयों से आप सभी का खूब इस्तकबाल करती है। Now, I would request the Dean, Professor Salman Ahmed Khan, Dean School of Sciences, to deliver the welcome address. Sir, please. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning and very warm welcome to all. Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan Sir, Chief Guest of this conference, Professor Rao, Honorable Vice Chancellor, Hyderabad University. Keynote Speaker, Professor Ahmed Kamal Sahab, Professor Emeritus, Bispulani, Hyderabad. Convener of this conference, Dr. Salahuddin Sahab, Co-Convener, Dr. Mazid Ali Chaudhry Sahab, dignitaries, our colleagues, and dear participants. I feel extremely glad to welcome you in this International Urdu Science Conference on theme Science for Sustainable Future. The theme implied that science should have a positive impact on education and that learners should have more engaged in science and innovation for sustainable future. I welcome and express my gratitude to Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan Sir, who have taken the time to come to this conference despite their busy schedule.
We are grateful for your constant support throughout the series of conference and workshop that we had recently organized. I welcome Chief Guest of the conference, Professor Rao Sir, and keynote speaker, Professor Ahmed Kamal Sir, for accepting our invitation, and it's honored to be graced by the presence of such eminent scientists and academicians. I personally welcome all the delegates who are presently here and joined with us online. I wish to inform you that Maulana Azad National Urdu University is Central University. It was established in 1998, having A+ grade in present NAC ranking. The objective of MANUU are to promote and develop Urdu language to impart education and training in vocational and technical courses through the medium of Urdu. To provide their access pupil desirous of pursuing program of higher education and training in Urdu through the teaching on the campus, and to provide focus on women's education. Keeping in view the mandate, we have organized this conference bilingual and in dual mode. We have a special session for women scientists. I welcome all our female colleagues in this special session. A part of this conference has a special session for our upcoming generation, that is a session for school children. मेरे अजीज बच्चों, मैं आपका इस इंटरनेशनल उर्दू साइंस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूं. I am happy to inform you that School of Science was established in 2006. Presently, we are offering UG and PG, PhD program in mathematics, physics, chemistry, and geology. We have adopted NEP 2020 from the last academic year. Along with these regular program, School of Science also running self-finance vocational program at UG and PG level, VWOC and MWOC in medical imaging technology and medical lab technology. These courses have great employability in the health sector. Taking the advantage of this occasion, I am happy to inform you that the month of February 2024, the School of Science successfully organized many conferences and workshops. We have organized workshop cum training on UV visible spectrophotometer organized by the chemistry section, workshop on tools and techniques in molecular biology and bioinformatics was organized by zoology section, international conference in chemistry on recent advance in applied chemical science was organized by chemistry section, national workshop on MATLAB and its application in scientific computing was organized by the Department of Mathematics. National Science Day on 28 February was organized by the School of Sciences. National Symposium on Current Advance in Applied Physics was organized by the Physics section. Through these workshops, we have trained around 160 participants in various techniques, and around 200 scientific papers were presented in these conferences. One more workshop is scheduled on genomic data analysis will be organized by the botany sections from 6 to 7 March 2024. I invite you to participate this workshop. I congratulate the convener, co-convener, all the faculty member of School of Science, research scholar for organizing this International Urdu Science Conference. I wish a great success of this international conference. Once again, I welcome you all to this International Urdu Science Conference. Thank you, and honor. बहुत बहुत शुक्रिया सर. हम बहुत मशकूर हैं कि हमें आपकी सदारत हासिल है और आपके साये में स्कूल बराए साइंसी उलूम रोज़ बरोज़ तरक्की की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है. ख़वातीन व हज़रात, स्कूल बराए साइंसी उलूम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही गैर मामूली इदारा है जो तलबा के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट और कोर्स डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए मौका ब मौका वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद करता रहता है. बैनुल अक़वामी उर्दू साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 के अगराज़ व मक़ासिद को बयान करने के लिए मैं इस प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब
प्रोफेसर सैयद सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और इस कॉन्फ्रेंस का ज़ख़ीम तारुफ पेश करें। Assalamu alaikum and very good morning, respected dignitaries over the dais, on the dais and of the dais, and our chief guest, Professor B.J. Rao sir, Dr. Ahmed Kamal sahab, and Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Professor Ainul Hasan sir, and our Dean, Professor Salman Ahmed Khan sir, and co-chair of the conference, Dr. Majid Ali Chaudhry, and respected colleagues of School of Sciences and respected colleagues of Maulana Azad National Urdu University, and all those who join the conference online or watching our conference on YouTube. People from America, Australia, Switzerland, Japan. I can say there are many more joining the conference, those who can't come. So they were watching us on YouTube live. So मैं आप सबका इस कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और खुसूसन वो स्कूल के एंथुसियास्टिक तलबा जिनके प्रोजेक्ट को यहाँ पे मंजूरी दी गई और आज एक मखसूस मकसद के तहत यहाँ पे मानू को आए हैं। तो मैं एक बात बताते चलूँ, वक्त का तकाजा है, बहुत ही मुख्तसर काफ़ी चीज़ें हमारे डीन साहब ने बता दी कि क्या मकसद के तहत हमने स्कूल ऑफ साइंस में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया। तो आज की ये कॉन्फ्रेंस जैसे मौजू ही बताता है, साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस पायदार मुस्तकबिल के लिए। हम एक तालिब इल्म, हम एक उस्ताद या रिसर्चर होने की वजह से ये हमारा फरीज़ा बनता है कि न सिर्फ हम अपनी नशोनुमा के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के माहौल का भी ख्याल रखें, और ये जिम्मेदारी किसी हुकूमत, किसी इदारे या किसी मखसूस शख्स पे नहीं, बल्कि हर वो इंडिविजुअल शख्स पर होती है जो इसका जिम्मेदार होता है कि इस जमीन को, इस कुर्रे अराजी को एक खूबसूरत सरसब्द सादाब रखे और आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छे से अच्छे मौके फराहम करें। इसी को जहन में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुकूमत के हिंद की जानिब से दिए जाने वाले टाइटल साइंस पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद पर रखा गया। और ये कॉन्फ्रेंस की दो अहम खुसूसियात हैं जो पहली दफा होने जा रही हैं। एक है कि चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस, कि भाई हम अपनी यूनिवर्सिटीज में लेबोरेटरीज मौजूद होती हैं, कुछ कोलैबोरेशंस होती हैं, हम तो साइंस में मुलविस होते हैं, लेकिन कई ऐसे स्कूल्स हैं जो हालात और दिल में ख्वाहिशात के बावजूद वहां तक एक्सेस नहीं कर पाते। तो उनको गाइड करने के लिए स्कूल ऑफ साइंस का ये वाहिद प्रोग्राम मानूस आउटरीच प्रोग्राम जो है, रीचिंग टू द अनरीच्ड, उसके तहत हमने सारे हैदराबाद और अतराफ अकनाफ के स्कूल को दावत दी कि आए, अपने साइंसी तजुर्बात को हमारे आगे पेश करें, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहां तलबा अपनी तहकीकी और तख्लीकी सलाहियतों को पेश करें और मजीद फौकियत मिले। और दूसरी चीज जो पहली दफा शुरू की जा रही है, वुमेन इन साइंस, यानी खवातीन का साइंस में क्या हिस्सा है। तारीख गवाह है कि खवातीन ने दुनिया के हर मसले और हर काम में शाना बशाना रही, लेकिन जब रिकग्निशन की बात आती है तो थोड़ा सा कंजूसी हम सब में हो ही जाती है। वो रिकग्निशन उन्हें नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं, जबकि सबसे पहला उस्ताद माँ का गोद होता है, और सारी कायनात का तस्वुर इंसान के साथ अगर खातून ना हो तो फिर आप सोचिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उसको मजीद फौकियत देने और साइंस में इनके इक़दामात को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन इन साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए एक मखसूस प्रोग्राम अरेंज किया, और 10 पैरेलल सेशंस हमारे हैं, 10 मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत आगे इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिनों में दुनिया भर के साइंसदान जुड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि मौजूदा मसाइल को अपनी साइंस को एज ए टूल इस्तेमाल करते हुए इनको किस तरह समझें और इनके हल को तलाश करें और इंसानियत की राहत पहुंचाएं। जैसे मानू तराने में आपने सुना, ये बाबे इल्म है,
क्या है भाई, सुना अभी? ये बाबे शायर इल्म है उर्दू जुबान का। तो उर्दू जुबान में हम साइंस को अपना कर किस तरह सारी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, करने के लिए क्या इक़दामात करना है, ये सारी कॉन्फ्रेंस में हम तय करेंगे। और फिर और आखिरी शेर में आपने यही सुना कि सारे शहर सारे जहां में हो नाम हिंदुस्तान का। तो आपने देखा कि वैक्सीन कोविड-19 के दौरान दुनिया में कई मुमालिक होने के बावजूद हमारे बीजे राव साहब जैसे कई साइंसदानों ने दिनों रात की कोशिश के बाद सारी दुनिया को हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ाने वैक्सीन के लिए मजबूर कर दिया, और दुनिया को हिंदुस्तान का रुख करना पड़ा वैक्सीन के लिए। तो जोरदार तालियों के साथ वो तमाम साइंसदानों को जिसने आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम पहुंचाया कि हिंदुस्तान में भी ऐसे अशखास मौजूद हैं जो अपनी साइंस के जरिए सारे आलम की खिदमत कर सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो अब रही बात ये कॉन्फ्रेंस की क्या खुसूसियात है, हाई स्कूल के तलबा में बस 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। IMC टीम से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो पेश करें। एक 2 मिनट का वीडियो आप देखें किस अगराज और मकासद के लिए हमने उर्दू स्कूल ऑफ साइंस की जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्लीज IMC गौर। Once upon a time, there was a king in his castle. He lived in a beautiful world with high mountains, great seas, and marvelous animals. He thought he was a good king, but didn't really care about his kingdom. He just wanted to be rich and lead a wealthy lifestyle. To make the things he wanted, he built great factories. And to travel faster, he built roads, railways, and airports. This needed a lot of energy, so the king drilled deeper and deeper for oil, and built more and bigger power stations. He thought that things had never been better. But gradually, his kingdom began to suffer. Large forests were felled, huge areas became like deserts, and even the climate itself began to change. He thought he could control everything, but slowly, the king realized that he must be kinder to his beautiful world or it would be damaged forever. He came to understand that he served his kingdom as much as it served him. So, he made energy from the force of the wind, the power of the water, and even the heat of the sun. He tried to save energy and think of the future, not just the present. And he, and his sons and daughters, hoped that this would be enough. So did the kingdom recover? And does the story end happily ever after? No one knows yet, because you and I are still part of it. तो आपने एक नन्ही सी लड़की की कहानी सुनी एक बादशाह के लिए। Once upon a time there was a king. वो किंग कोई और नहीं, आप और मैं हैं, जो हम अपनी ज़रूरियात नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात के लिए कुदरती वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल कर कर एक खूबसूरत दुनिया को किस दुनिया में तब्दील कर रहे हैं, ये सब आप सब जानते हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ इस UN की इस छोटी सी क्लिप को, तो ये आप और हम पे जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारी तालीम सिर्फ हमारे लिए ना सही बल्कि इस कुर्रे अराजी पे बसने वाले हर वो जानदार पेड़ शजर सबके लिए हो, और फिर से ये उसी तरह सरसब्ज़ शादाब मुकाम बने जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। तो इसी के साथ मैं हमारे को कन्वीनर माजिद साहब को बुलाता हूँ, कहता हूँ कि बस चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किस मकसद के तहत किया गया, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में 1 मिनट बताएं, फिर उसके बाद प्रोग्राम का आगे सिलसिला चलेगा। प्लीज माजिद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
Assalamu alaikum, a very good morning to all of you. On behalf of School of Sciences, Maulana Azad National Urdu University, I, Dr. Majid Ali Chaudhary, co-convener of International Urdu Science Conference, welcome you all to this Children's Science Congress. So as Salahuddin Saab has already told a lot about Children's Science Congress, basically the idea behind Children's Science Congress is not new. It is started long back, and in different parts of the world, like Europe and USA, they are already organizing International Children's Science Congress. As far as India is concerned, this concept came to known later in 1990s. Around 1993, this genesis of National Children's Science Congress was held in Gwalior, Madhya Pradesh. And it was an experiment only. Later on, this concept was taken over by Department of Science and Technology, and from 1993, it is being celebrated. I should say celebrated because we are involving our young champs or young scientists, budding scientists who are going to form this country, inshallah, in future. So that's why I'm saying we are celebrating this National Children's Congress every year since 1993. So जैसे सलाउद्दीन साहब ने बताया, इसके जो मकासद हैं बच्चों, एक तो ये कन्वेंशनल जो स्कूल की तालीम हमारी है, बच्चे जाते हैं, उनको बहुत सारे मौके फराहम किए गए, लेकिन बहुत सारे हमारे तलबा ऐसे हैं जो किसी भी वजह से जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप्ड आउट हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई और वजूहात हो, तो ये जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये उन तमाम तलबा को, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं या किसी वजह से स्कूल से ड्रॉप्ड आउट हो गए, उन सबको वो मौके फराहम करना जिससे वो जो अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक स्किल्स हैं, उनको वो एक्सप्लोर कर सकें और उनको एक एक्सपोजर मिल सके. देखिए हमारे यहाँ पर अगर सीवी रमन सर की बात करें, उनके बाद से अगर नोबेल जो है प्राइज या फील्ड मेडल मैथमेटिक्स में दिया जाता है, तो ना के बराबर ही हम कहेंगे. तो मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के अंदर साइंसदान पैदा ऐसे नहीं हुए जो नोबेल नहीं जीत सकते, बल्कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे साइंसदान पैदा हुए, लेकिन उनको वो मौके फराहम नहीं किए गए या उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल सका जिसकी वजह से वो नोबेल जीत सकते. तो इस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का मकसद वो मौके अपने उन बच्चों को जो कन्वेंशनल स्टडीज में स्कूल जा रहे हैं, या वो बच्चे जो स्कूल नहीं भी जा पा रहे, किसी वजह से ड्रॉप आउट हो चुके, जैसे हमारे मदरसे के भी तलबा हैं, उन तमाम के तमाम को वो मौके देना जिससे वो अपने साइंटिफिक स्किल्स को पूरी दुनिया को दिखा सकें. इसका ये एक वाहिद मकसद है. तो इसी के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं और एक बार फिर आप तमाम का मैं इस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में इस्तकबाल करता हूं. और सर आपकी इजाजत से 2 मिनट लूंगा. मैं किसी एक बच्चे को, क्योंकि वी कैन सी द एक्साइटमेंट और हाउ कॉन्फिडेंट दीज यंग बडीज आर, तो एक बच्चे कोई भी आए प्लीज और बताए 2 मिनट के अंदर कि आप किस मकसद से आए हैं और आप क्या शो करना चाहते हैं इसमें, प्लीज. आ जाओ आप भी, बस बहुत मुख्तसर आपको बताना है. एक करके 2 मिनट में बताएं कि क्या आप what you are going to learn, why this platform is important. Could you tell to sir? यहीं पे, हाँ, please go ahead to the audience. On. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to one and all. Respected Vice Chancellor of this university, ladies and gentlemen, esteemed delegates, organizers of this international conference, and my dear friends. As a student representing my peers from around the world, I am honored to address you today on the vital intersector of science fair and sustainable development goals. Science fair are not just about winning prizes. They're about igniting curiosity, fostering innovation, and finding solutions to real world problems.
At the age as a student, be curiously explorers, eager to understand our surroundings, to make a difference. The methodology of science fair are helps to learning, collaboration, and creativity by engaging the projects that tackle sustainable development goals. We learn the importance of conservation, equality, and community involvement. From designing eco-friendly solutions to addressing social injustice. Our projects aim to make a tangible impact. We will believe that every small action counts towards achieving a sustainable future for all. So let us embrace the methodology of science fair as a tool for learning, growth, and change. Together, let us work towards a world where science and sustainability go hand in hand. Thank you for your attention, Jim Shafran, classes of Neeraj Nursery, KJ High School. So you can see the confidence of this budding scientist. And now we have one children from madrasa background who is not getting conventional studies. बहुत मुख्तसर बेटा बता. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. मैं तस्मिया खान बिन्त इबादुर रहमान, जामियातुल मुफलिहात हाई स्कूल उर्दू मीडियम 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 10th क्लास के साथ साथ आलमियत का भी कोर्स मुकम्मल हो जाएगा. मेरे मॉडल का नाम है रॉकेट लॉन्च थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. जैसा कि हम ये सुनते आ रहे हैं कि चंद्रयान 3 या फिर दूसरे रॉकेट को स्पेस में छोड़ा गया, लेकिन उसके पीछे की साइंस के बारे में हमें मालूमात नहीं है. दरअसल न्यूटन का तीसरा कुलिया रॉकेट पर अमल करता है. न्यूटन का तीसरा कुलिया ये है कि हर अमल का मसावी और मुतज़ाद रद्द अमल होता है. यानी कि जब रॉकेट के ईंधन को जलाया जाता है तो वो गैसेस का अखराज करता है. ये उसका अमल हुआ और गैसेस रद्द अमल करते हुए रॉकेट को ऊपर की जानिब ढकेलते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट स्पेस तक पहुंचती है. और इसी तरह 1 मिनट में रॉकेट 3600 मीटर का फासला तय करती है. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहुत बहुत शुक्रिया. आपने देखा ये बच्ची जो है ये मदरसे की तालिब इल्म है और माशाल्लाह इनका कॉन्फिडेंस, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि जितने बच्चे बैठे इनमें से बहुत सारे इंशाल्लाह नोबेल जो है प्राइज जीतेंगे, बहुत सारे फील्ड मेडल जीतेंगे इंशाल्लाह. तो इन्हीं के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूं और फिर से एक बार आप सबका चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में इस्तकबाल करता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for your motivating words, sir. Now I would request the convener of the program, Professor Salahuddin Sayyid sir, to kindly introduce our keynote speaker for today's program, Professor Ahmad Kamal sir, and also welcome him to share his thoughts. जैसे कि सारिया नुमाना ने बताया कि मुझे ये हिदायत दी गई कि आज के कीनोट एड्रेस प्रोफेसर अहमद कमाल साहब का मुख्तसर से तारुफ दो. अब हम आपके कलीद खुतबे को समाअत करने जा रहे हैं. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंट्रोडक्शन या तारुफ के मोहताज नहीं होते हैं. इन्हीं में से एक प्रोफेसर अहमद कमाल साहब हैं जो मौजूदा वक्त में बिट्स पिलाने में एमरेट साइंटिस्ट की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं. इससे पहले इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT हैदराबाद एज ए डायरेक्टर के ओहदा संभाला और काफ़ी वक्त तक वहाँ पे अपनी खिदमात अंजाम दी. और उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि हैदराबाद का पहला इदारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस नाइपर के फाउंडर डायरेक्टर के तरह इन्होंने खिदमात अंजाम दी और हिंदुस्तान भर के 5 में से पहला हैदराबाद में नाइपर मतलब इदारे की लीड किया. और रही बात आपके काम की, एक केमिस्ट हैं और इनका ताल्लुक भी हैदराबाद से है और इनकी इल्मी सफ़र हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से शुरू होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट के तौर पर अपॉइंट हुए
और माशाल्लाह 2 बेहतरीन फेलोशिप आज के दौर की JSPS फेलोशिप पर जापान विजिट किया, पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए US गए और पिछले 3 दहाई से ज्यादा ऑर्गेनो कैटालिसिस, बायो कैटालिसिस, आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या ऐसे कैटलिस्ट के बारे में तस्वुर करते हैं कि जो माहौल को खराब न करे, लेकिन आप पिछले 3 दहाकों से अपनी खिदमात इसमें अंजाम दे रहे हैं और आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 550 इंटरनेशनल पेपर्स आप रखते हैं। कैन यू बिलीव 550 पेपर्स and more than 410 patents। पेटेंट जानते हैं आप, जब भी कोई डिस्कवरी होती है तो उसे पेटेंट किया जाता है। तो हिंदुस्तान की कुछ एक अशखास में से आप एक ऐसे साइंसदान हैं जो 400 से ज्यादा पेटेंट्स रखते हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं इस मौके से कि मुझे भी अल्लाह ने ये शर्फ दिया कि आपका तालिब इल्म रहा हूं। I was a student of him, I'm still a student of him। He taught me my first year's PhD at Indian Institute of Chemical Technology, drug discovery and development, how chemical molecule can be utilized to diagnose a disease condition, and rather on afterwards collecting that knowledge to draw, synthesize and prepare a small molecule which can inhibit antibacterial activity. So I feel privileged and honored to be his student. And in fact, it's been 23 years. Sir is visiting my lab when I was at Switzerland for my PhD. And after 22 years now, I'm listening to him today, inshallah. So I welcome you, sir. Without much to tell, when he tells, you know who's he? तो कुछ लोग किसी तारीफ के मोहताज नहीं होते बगैर किसी और तारीफ। और सर के PhD स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे डॉक्टर आरिफुद्दीन साहब बैठे हैं। मैं सर आपसे थोड़ा सा, हमारे अपने मानू के DD फैकल्टी हैं, ये सर के पहले स्टूडेंट्स हैं और 105 स्टूडेंट्स को इन्होंने PhD मुकम्मल करवाया। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि सर की सेहत ऐसे ही रहे, ये 105 205 भी हो जाएं और ये हमारे दरमियान रहें। तो मैं इसी कलमात के साथ बहुत ही अदब व एहतराम से मैं हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद कमाल साहब का इस्तकबाल करता हूं कि वो आए और कीनोट एड्रेस से हम सबको नवाजें। Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Dignitaries on the dais, particularly the Vice Chancellor, Professor Ainul Hasan Sahab, the Vice Chancellor of University of Hyderabad, Professor BJ Rao, the conveners, and also the Dean, Professor Salman, Dr. Salahuddin, and Majid Ali Chaudhry, and faculty of MANUU, and my dear students. I've been visiting this place quite a few times in different occasions, relating to various programs. Although now I must be visiting after 4 years or 5 years, I don't remember, because in between I was in Delhi for a few years. And I think it's a great introduction which has already been given about the sustainability through the video what Dr. Salahuddin has presented. What I would do is, since I have to do this presentation on sustainable development aspect, so I have taken an example in this particular case. Maybe we have to bring down the lights, I think, but I don't know how this. So what I want to, maybe I can't move from here. What I want to talk about is how we can improve the sustainability through some aspects of green chemistry, and particularly pharmaceutical chemistry. As you all know, a lot of
steps are involved when you are making a molecule. जब आप एक molecule को construct करते हैं, जो drug को बनाते हैं, इसमें काफी steps जाते हैं, जिसमें आप काफी hazardous reagents use करते हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी करते हैं कि जो उसके effluents आते हैं, ये भी काफी एक किस्म के pollutants होते हैं. तो हम इसको एक कॉमन वे में ये बोल सकते हैं कि हम दवाई तो बना रहे हैं इंसान की कोई ना कोई हेल्थ इश्यू के लिए, बट ऑन द अदर साइड व्हाइल डूइंग दिस वी आर क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑन द अदर साइड. आई मीन दिस इज समथिंग, मतलब एक के लिए आप दवा दे रहे हैं, उस दवा बनाने के लिए आप जो है कुछ लोगों को दूसरी तरीके से मुतासर कर रहे हैं, जैसे पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं. और ये ऐसे हुआ था, आप सबको याद होगा जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास जब उस जमाने में टिल 90s वी हैड द इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो ये वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स बनते थे, एंटीबायोटिक्स से लेके काफी एंटी इन्फेक्टिव्स आई वुड से. तो इसका पोल्यूशन जो होता था, जो पर्टिकुलरली जो एफ्लुएंट्स जाते थे, ये सब जो है, क्योंकि ये थी बालानगर में, और वहां से ये होते थे सीधा हुसैन सागर में आते थे. तो उस लिहाज से हमने कितना स्पॉइल उस जमाने में, क्योंकि कुछ सीख से नॉर्म्स नहीं थे हमारे पास, सो ये सब प्रॉब्लम्स रहे. तो इससे काफी मतलब ऐसे टाइप के माहौल पैदा हुआ जिससे उस तालाब के मच्छियां जो रहते थे, उसमें जो फिशेस होते थे वो खत्म हो जाते थे. This was a cycle which all happened. Although a lot of norms were brought later, now we have no doubt norms भी होते हैं, but कुछ लोग चाहते हैं how to overrule the norms also. तो ये these are some things which are. तो इसके लिए एक important चीज ये है कि how do we really bring down the this particular problem if we can modify the chemistry of this whole thing. And so that is where this green chemistry started in the last 2-3 decades. And a couple of examples are there in this. So I'll come to an example of, this is only a general statement about sustainability. Most of you know this. I don't want to go through this. We can go to the next slide. अब देखिए ग्रीन केमिस्ट्री में जो है मेजर इश्यू क्या है, हमको जो है माने how do we really bring this is by addressing all these aspects. So this is what I have tried to narrate here. You bring down reduce the waste, material usage, hazardous reagents और chemicals को usage कम करें तो उससे रिस्क भी कम होगा, फिर एनर्जी कंजम्पशन भी कम करें, and eventually it should be affordable also. So these are some general aspects what I'm mentioning here. Next slide please. So as I mentioned, green chemistry में किस तरीके से आप pollution को कम कर सकते हैं और also environmentally friendly processes बना सकते हैं और जिससे एक reduction होगा for the generation of hazardous substances. And this program को 12 principles है, which quite a few of you may be knowing. I'll just run through that, maybe for the sake of the students who can just get an idea. Next slide, please. One is prevention of waste, how best we can prevent the waste while doing a process. Then design as far as possible safer chemicals and also design less hazardous chemical synthesis. Next, please. Use renewable feedstocks. This is where is also a very important aspect. Maybe a couple of examples I'll giving you about this, what we were doing. Then use of catalysts, preferably not stoichiometric reagents, and avoid chemical derivatives. जहाँ पे हमको protections की ज़रूरत रहती to do a next step, because फिर वो protect करने के बाद उसका जो part है वो again that comes as an excess aspect. Then
also, so that derivatization aspect, whether we can reduce. Next, please. Next slide, please. These are again a couple of things like maximize atom economy, use safer solvents, where we can avoid solvents, whether we can carry out the reactions in water itself, nothing like that. Then increase energy efficiency, जहाँ पर हम high temperatures को avoid करें, क्योंकि you would lose energy. We can do it at room temperature and also pressure also. These things can be avoided. Next, please. So these are the, I would say, 3 or 4 areas I have just listed here, where our research group had worked in the last 20 years. Although my background, most of you may be knowing or may not be, I have been a medicinal chemist. And I was more into drug discovery programs, particularly for cancer. And this was also a parallel project which I was doing in greener processes. And this is where biocatalysis and biotransformations is one of the aspects which plays an important role in green chemistry. Then it could be, again, certain areas which I'll go through. Next slide, please. So what are biocatalysts? See, basically, we can accelerate the rate of a reaction, specificity, selectivity. These are all advantages while one carries out enzymatic reactions. So there can be attractive catalysts other than the metal catalysts. So these being biodegradable, very safer compared to the usual metal catalysts. Because again, how do we really get rid of the metal catalysts is another problem. So this happens to be a very greener aspect with respect to the synthesis of molecules in case of this. Thank you so much. So what are the other things which we can do is, we can also do low-cost production of enzymes, because enzymes can be produced through fermentation processes today. Then rational alteration of their properties can be done. It's called as tailoring of enzymes, where we can specifically do a modification in a molecule by altering the enzyme also. So these are all opportunities exist. This is another aspect which has started, because most of the enzymatic reactions are carried out in the aqueous medium. But a large number of organic compounds, they don't solubilize in in aqueous media. So in that aspect, in certain enzymes were also isolated, which can function in organic solvents. Then all these things can be addressed. Next, please. So these are again a couple of things which I won't get too much into details, how the enzymes can carry out broad-based organic transformations, which we generally refer as biotransformations. Next, please. See, biocatalytic processes comprise of 2 aspects. One you carry out as growing cells, the other one as resting cells. Now, in the case of growing cells, as you all know, it's the fermentation process. In resting cells, it will be the whole cells, also cell-free enzymes. Next, please. These are the entire classes of major types of enzymes which we utilize for different types of transformations. Next, please. Then this is how an enzymatic process really happens. How do you really do this? I won't go into the technical details of this, how the biomass can be utilized for doing this particular, and also the purification of an enzyme and so on. Next, please. This is a typical fermenter where you carry out the fermentation processes, mostly for the preparation of enzymes. Next, please.
And this is for the downstream processing. You carry out all this aspect through centrifuges and all that, and then finally isolate your products. Next, please. So what is enzymes? Quite a few of you know that basically they are proteins, and that these proteins are basically the macromolecules with molecular mass of 10 to the power 4 to 10 to the power 6 daltons. Next, please. Now, the other aspect is when you carry out the reactions in enzymes, basically you practically lose that enzyme. And the thing which started is how do you recover this? And this is done by doing immobilization of enzymes. So that once the enzyme is immobilized, you can carry out a reaction and again it can be reactivated and reused. So you are again minimizing the use of catalyst and reusing it. So there are different ways to do that. Next, please. Then there could be different carrier materials and so on. Next, please. And this is a typical process design, how the whole process goes till the final product isolation. Next, please. So the program which we started, I would say in the early 90s in this area, keeping the enzymes as catalysis in organic synthesis, this was something, these type of objectives were kept in mind. We wanted to first of all explore the catalytic activity of enzymes, then particularly this was a very important aspect, the asymmetric synthesis of the biologically active compounds. I must mention that asymmetric synthesis, why it is required is the compounds have different, they could be of different enantiomers or isomers. As you all know, they have forms which the basic chemistry, you call them as optical isomers, or wherein, just like you say as a left hand, when you see a image in the mirror, it could be left-handed or right-handed. So the biological activity itself varied for each isomer. So that is why the separation became an important aspect. And then enzymes could also reduce the multiple steps. I may show you a quick example, and then replacement of hazardous reactions and so on. Next slide, please. These are a couple of examples which we have carried out. This is mostly for a couple of, for the drugs like tamoxifen, and these type of processes were developed where enzymatic process was involved, and shown the advantages of this. Next, please. This is again another, that was the fluoxetine. This is the diloxetine. These are one of the largest, I would say, used drugs. Their sales could be in billions of dollars per year. And this is where these processes were developed, which are totally enzymatic aspect was brought in, and we call them as chemoenzymatic, when the process has a chemical step as well as an enzymatic process. Next, please. Here also some sort of enantiomerically pure things were done through separations by lipases. Next, please. Some couple of examples here also, and wherein we have done for this gamma azidoacetates, where separations can take place, and these becomes the important precursors in the synthesis again for fluoxetine and duloxetine. Next, please. Now I come to a different aspect. Here, this is a microbial oxidation. That means we are using a whole cell. So a couple of these type of species were used, the microbes like Pichia and Candida species. And if you see very clearly, this is a long chain alkane. It comes out in bulk from most of the petro products, and it has no value in this form.
So, but if you make this as a dicarboxylic acid on two sides, it becomes a valuable product which is used in many of the creams and so many things. So this whole process was developed through a microbial process, and you get the end product, which is called as the brassalic acid. This was basically given to the Indian Oil Corporation because this was the product they were using it. So this process was given to the Indian Oil Corporation for further development. Next, please. This is again the process for acrylic acid to acrylonitrile. This is again a process where such processes are used in many of the adhesives. And this was again a process which was given to the Pidilite industries for their utilization industrially. Next, please. Okay. Now I will just run through. If you can just run through a couple of slides, we will go to the last two. Just run through slides. Little fast. I'll just go to. I skip this. Yes, I'm finding it up. Stop it. Just go back one. That's enough. So this is just, I want to sum up saying that we have carried out large number of processes which could be of great value in this particular thing for bringing down not only the pollution, but it has the direct aspect on sustainability. So many of you could explore such things in your research programs. Next, please. Yeah, these are a couple of students who had participated in this particular programs. Next, please. This happened to be most of my students who came in around, I think, 2016. There was a medicinal chemistry meeting in my honor at ISCT. So a large number of students have joined in this particular thing. In fact, I can see that even Arifuddin is around here. Okay, next, please. Yeah, this is the laboratory where we used to work. Thank you so much. So you can always interact if you have any aspects to be discussed in this particular programs. And I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to just highlight some of the things which are happening in our research group, what really happened in the last few years. Thank you all and best wishes. बहुत बहुत शुक्रिया इज़्ज़त-माब प्रोफेसर अहमद कमाल साहब, आपके खूबसूरत और अमीक इल्मी मुताले से हम उम्मीद करते हैं तलबा मानू आपकी खुशबू को बहुत देर तक अपने जहन में मुक़य्यद रखेगी। ख़वातीन हज़रात, बैनुल-अक़वामी उर्दू साइंस कॉन्फ्रेंस की इस पुरशकोह तकरीब में अरबाब इल्म व दानिश के माबैन इल्म और हिकमत का नूर अपने दामन में समेटे हुए एक कहकशां जलवागर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान का पुरमानी इस्तिआरा, इल्म दोस्त और गुरबा परवरी का खूबसूरत शिराजा, तफक्कुर, तदब्बुर और इस्तिदलाल की ज़बान का माहिर। मेरी मुराद आज के इस पुरशकोह तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त-माब प्रोफेसर बी जगदेश्वर राव, शेखुल जामिया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर माजिद अली चौधरी साहब से, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के को कन्वीनर भी हैं, क्या तशरीफ लाएं और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया का खूबसूरत और अमीर ज़ख़ीम तारुफ पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि प्रोफेसर बीजे राव साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारी यंग जनरेशन भी बैठी है और मेरे खुद के लिए भी एक इंकरेजमेंट और इंस्पिरेशन के लिए आपका मुख्तसर तारुफ मैं दे रहा हूँ। Professor B.J. Rao sir is currently Vice Chancellor at University of Hyderabad. He has served as Senior Professor, Chair of Biology, Dean Faculty at Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, Andhra Pradesh. And he was also associated with Biology Department at TIFR, Mumbai for about 24 years and served as Senior Professor and Chair of Biology Program. He is a National Science Talent Awardee, first rank in AP, and 16th rank in India.
He received his PhD from Indian Institute of Science, Bangalore, and worked as research scientist at Yale University Medical School, USA, before joining TIFR Mumbai. Professor Rao is fellow of all three National Academies of India, Sir J.C. Bose Awardee from the Department of Science and Technology, Government of India. He has made fundamental contributions in the areas of genome biology and cellular regulations and adaptations, where he published about 160 peer-reviewed international publications with highest impact factors. He has chaired and been a member of several national and international committees on various policy matters and related to science, technology, and education. He has widely traveled and lectured across the globe and is a strong votary of knowledge-centric, concept-oriented, interactive modes of learning methods combined with a strong to-do-it-yourself critical thinking models. Professor Rao has won many awards and recognitions. He has contributed significantly as the chief editor of Journal of Biosciences. He has been a DST-inspired teacher, articulating the current excitements of basic biology to undergraduate students across India. He perceives biology as a complex manifestation of physics chemistry of a dynamically evolving system and emphasizes the design principles in biology. He has delivered numerous technical and public lectures for varied audiences. Reaching young minds has been his passion. So on behalf of School of Sciences, MANUU, sir, I welcome you all here. Sir, please. Good morning and sabko adab. I want to applaud the conveners of this meeting today, which I believe is reaching several countries. Yes. An audience from across the globe is connected with us today now. Secondly, this celebration also is touching very important points: contribution of women in science and the role of science for shaping up the minds of students. Both connecting into the sustainability of the future. So these are very important threads getting interwoven today and tomorrow, today's seminars. I want to thank Hassan Sahab for inviting me here. He's a good friend of mine, and Professor Kamal Sahab for giving an extremely brilliant seminar on how chemistry changes, how innovations in chemistry can improve the sustainability of the future, and other important delegates sitting on the dais. I'm going to be very crisp in my presentation, and I want to be rather candid also. Every GDP-centric growth activity will end up damaging environmental ecosystem. This is given. Every damage has a built-in catastrophe into it. This is how the design is. Human body develops as a negative entropy system. We organize ourselves. When we organize, we disorganize our surroundings compensatorily. The entropy in the surroundings will increase at the cost of our development. So the whole construct is such that when you develop something, something else will get undeveloped. That's the design. We are now at a very, very critical point. Why do I say so? For the last 150 years or so, the average global temperature has gone up by 1 degree centigrade. It is not visible to us on a day-to-day basis. Life is normal in a day-to-day basis. You don't even feel it. 1 degree centigrade rise for the last 150 years. What's the big deal? The big deal is to come next. The moment this temperature rise touches 1.5 degrees to 2 degrees, there will be chaos. There'll be chaos in the ecosystem. That sustainability becomes a big question mark in everyone's life. How much time are we left with?
at the rate that we are increasing the temperature, maybe 50 to 100 years. Our challenge is not to exceed 1.5 to 2 degrees centigrade rise in the average global temperature. This is the challenge in simple language. Who is raising the temperature? Human activity. Most of the temperature rise is anthropogenic. Humans are intelligent, but at the same time, they are very, very unintelligent. They are unintelligent because they're extremely greedy. They want to develop too much too fast. This is what has brought us to this very, very delicate situation. So two things have to be done. All of us have to be aware of this impending danger. All of us are still not aware of it. Very small fraction of humanity knows about this impending danger. Awareness has to be spread to 100% in the entire global society, not just in India, because we are all connected in this. Global ecosystem is an entire human anthropocentric activity, not just India and other developing nations. Number one. Number two, all our activities must be towards protecting global ecosystem. We should conserve our resources, energy and material, number one. Number two, we should reduce our consumption rate in future as much as possible. Number two. And number three, all our activities must be green chemistry centric, circular chemistry centric. Life cannot go as usual in future. These three things, mantras, are very important for us. I'm saying in very simple language for my students to understand. If you don't do this, human race will come under a very severe stress 50, 60, 100 years henceforth. This is one important reality. The other important reality is the nations which have generated these greenhouse gases are those nations which have already developed. Per capita carbon footprint is very high in developed nations, even now. If you look at the global map, there is a global map where per capita carbon footprint is mapped, quantified. The high zones are all developed nations. The converse of that map is those nations where we are extremely vulnerable to this global warming. We are a vulnerable nation because our ecosystems, economic ecosystems, are all extremely vulnerable to high carbon that's going to rise. So we become vulnerable nations, and my developed nations are the driver nation. They create the problems. So these are complementary maps. If you look at it, exactly complementary. A developed nation is creating a problem in India because India is a vulnerable nation. Now the challenge, real challenge is we should invent science and technology in such a manner that the vulnerable developing nations must also develop, should become less and less vulnerable, and the developed nations who have already reached there should ensure that their greed level comes down. Their carbon footprint should reduce. The geopolitics indicate that they are not ready to reduce their carbon footprint. They only impose a lot of restriction on developing nations. So it's a geopolitics come in the way of sustainability. This all of us must be aware of. Now, keeping all this aside, it is very important for our young generation to be much more innovative in discovering science and technology, which is innovative, not high carbon footprint generating, and must lead to sustainable development. This is an anomaly. We need to develop, but we should be sustainable in development. This is an anomaly. Please remember, every developmental activity has a built-in catastrophe in it. So we must be innovative enough such that our development does not create extra carbon footprint on our future generations. This is the essence of the conference that we are participating today and tomorrow. It's a very big challenge for humanity. How do you
come up with scientific innovations which reduces ecological impact. This at the level of chemistry, at the level of biology, at the level of industry, physics, and technology. At all levels, we must ensure that all our activities are innovative enough that our growth is really sustainable. This is a real challenge, and this challenge can be met only by innovative science and technology, not life as usual technology. No. Innovative chemistry requires circularity, as Sir was telling. Innovative physics requires less energy consumption processes. Innovative biology requires that we don't throw up a lot of infectious and damaging agents into our environment. The Hussain Sagar, Musi River getting polluted will be a lot of stress on human biology. We should reduce that. And this should happen not only in India, but all developing nations, and all, more importantly, all developed nations. So, in a real sense, this is going to be a challenge for humanity where the paradigm of science and technology must change. And that will happen only by innovative minds. I was very happy to hear two young girls who are showing their exuberance towards learning new things. This is a good thing. These girls give me ummeed that we will proceed further and touch the right spots. Coming especially from girls, it assures me more. If it were coming from two boys, I would have been less assured. Because they say, talk about science today and tomorrow they go and do business management. Life as usual. So, good days are ahead provided we do good things. Good days are not ahead provided we do life as usual. This is as simple as that. Ultimately, discovering science and discovering technology is an intrinsically deep human mind process. We don't discover for the sake of money. We discover because we want to understand. We want to understand why the leaf is the way it is, why there is symmetry in the leaf, bilateral symmetry. We want to understand the nature. That is how science has come up. We want to find a larger purpose for ourselves. That's how science has come up. But ultimately, when science becomes technology and an enterprise where people make a lot of money, that's when things get slightly wrinkled. Ultimate driver for reducing carbon footprint is not to be greedy about oneself. There is enough for everybody, but there is not enough for everybody if one is greedy. We must work on the mind, finally. It is a mind solution rather than technology solution that works. We must mend our ways in the mind so that our requirements are minimized and future growth is maximized. This is your internal process that you have to work on. Only then we can leave a future which is much more amenable, much more peaceful, and much more happier for younger future generations. In my generation, we have done as well as we could. We brought up this country from almost deprived nation to highly developed nation, 5th largest economy. We have done well. We have done very, very well in the last 75 years. But the future has a lot more challenges. Therefore, we have done well. We are leaving a country which is reasonably well poised, and the future has to take it up further so that they make our development sustainable. I'm very happy to be sharing my thoughts on this podium across the world. And I have a request that please pay attention to some of these issues, which are so incrementally small that on day-to-day basis you won't find it. You won't find the effect of it. You do feel some inklings of it, some indications of it. You can see, environment is getting somewhat disturbed, it. But it is really not deeply affecting your lifestyle. But remember,
all these small incremental changes in the environmental system are cumulative. These are cumulative. All these incremental things will go like this, the graph. And this cumulative effect will be felt 50, 60, 100, 150, 200 years later. Make your mind sensitive enough for small changes. In fact, looking at small changes, integrating small changes is life. That is wisdom. Don't wait for a large jump to happen. By then the game is over. So I request all my students to be sensitive about their environments, their internal environment, such that they can perceive the changes that are happening intelligently. Intelligence, sensitivity, and working on your mind are the real solutions for making our growth sustainable. Thank you very much. Thank you so much for your inspiring words, sir. The words of wisdom shared by you with respect to sustainability of this ecosystem have actually surely deeply inculcated a strong perspective of the green earth and sustainable development amongst us. Thank you so much, sir. ख़वातीन व हज़रात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मौजू से ये कारवां और ये कॉन्फ्रेंस अपने आखिरी मरहले में है। मादर दरसगाह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने की हैसियत से मुझे ये बताने पे बहुत फ़ख्र और मसरत महसूस होता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस की सरसब्ज़ व शादाबी और इसकी हरियाली के तसलसल में रियासत तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के ज़रिए से यूनिवर्सिटी को गोल्डन गार्डन का एजाज़ हासिल हो चुका है। मुझे ये बताते हुए भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आज हमारे पास 100 किलोवाट का अजीमुज्जस्सा बिजली पैदा करने वाला सोलर पावर प्लांट जो कि यूनिवर्सिटी की इमारती इंतजामिया के पुरशिको छत पर तनसीब है। मुझे बताते हुए ये भी फ़ख्र और महसूस होता है कि हर साल इस इदारे के तलबा बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल वाटर डे के दिन एक खूबसूरत रैली का एहतमाम करते हैं और यूनिवर्सिटी के अतराफ में पानी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदारी पैदा करने की कोशिश करते हैं। आखिर में बहुत हक़ तलफ़ी होगी अगर मैं इस बात को यहाँ पर मेंशन ना करूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी होल्ड्स सेकंड पोजीशन इन द अवार्ड ऑफ द कैटेगरी फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन यूसेज फॉर द वाटर मैनेजमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ख़वातीन हज़रात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने अपने इदारे से शुरू कर दिया है और ज़रूरत इस बात की है कि इस पैगाम को अमली जामे के साथ पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ और इन तमाम कामयाबियों का सहरे इजाबत हमारे बेपनाह अक़ीदत मोहब्बत इज़्ज़त माब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब शेखुल जामिया के सर जाता है। ये उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। ये उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है इसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। आइए गुजारिश करें साहिब सदर से कि वो तशरीफ लाएं और जलसे को खिताब करने की सादत हासिल करें। In the name of the one who gave us life and wisdom, Professor Vijay Rao, a very good friend of mine, Professor Ahmed Kamal Sahab, a renowned scientist, Professor Salman Ahmed Sahab, Dean, Salahuddin Sahab, and Majid Ali Sahab. Friends, dignitaries, participants, girls and boys. Now this looks quite charming. That now the scientists are coming out with a solution to human concerns. And really, this is needed. We started our journey from gravity to relativity. Now, something more, where the age of artificial intelligence is dominating. अभी इधर ही किसी ने मेरे स्कूल की एक फोटो वायरल की।
मुझे नहीं पता कि वो मेरी ही फोटो है, बट उस पर कमेंट्स आए कि ये हसन साहब का बेटा होगा. Now look at, you see, this is happening in this world across the globe. I don't say that our country is special. Now things are happening in such a manner, and we have to be very alert. As Professor Rao suggests, that look, every bit, now because innovations are on. Every passing hour brings a new wave. And every passing day, a sea change. So these things are happening. वो किसी पर्शियन पोएट ने कहा था, अजमास्त के बरमास्त, जो हम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम ही हैं. And the pollutants all over, Professor Kamal has very well explained, कि क्या है ये जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं. So innovations for the sake of innovations, scientific and technological developments just for the sake of development, or it addresses human concerns also. So we are here questioning. मैं तो लिटरेचर का आदमी हूं, बार बार पूछूंगा ये धुआं सा कहां से उठता है. See, our constraint is that our kids know tomorrow what will happen. It talks about, you see, the ozone layer and the carbon production. Enormous. But yes, we have to understand our limitations also. What we are going to pass on to our coming generation, that is also our concern. We are at ease. But look at the global changes, in fact. Recently, I was in Chicago. It was -10. A total white all over. Very difficult to come out of the houses. Yeah. And then unusual. Yesterday, I am told that in Varanasi, there was a kind of storm. And this is indication that you be on high alert. It's not that things are not normal. So we should think about it. Now, these are, concerns. And now ये जो बच्चे आए हैं, उनको बता दें कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, there are two very specific mandates. One is the medium of instruction here is Urdu. And second mandate is that women empowerment. So I am sure that with these two, our younger generation will realize importance of both. But remember, don't be only scientist, be a social scientist also. ये रोशनी तो अंधेरों की एक अलामत है. ये रोशनी तो अंधेरों की एक अलामत है. दिमागो दिल में नहीं है तो रोशनी क्या है? ये रोशनी पैदा होगी. So scientists are sitting here. As a student of literature, I must say, खते गुबार में तहरीर है किताबे वजूद. खते गुबार बिना इसे, ये क्या है? पोल्यूटेंट्स हैं खते गुबार. खते गुबार में तहरीर है किताबे वजूद. The whole existence is, depending upon this. But how? खते गुबार में तहरीर है किताबे वजूद. फजा हो साफ
تو بتلاؤں زندگی کیا ہے. And there is no life if you live under these pollutants. There is life there. Everything becomes artificial, nothing natural. So I'm sure in the hours to follow, you will have a brainstorming sessions and you will come out with a solution. Thank you so much. So as sir has very well said, and as we continue to live with science, there is a need for a strong supervision on a periodical basis to remind us of our responsibilities towards maintaining a well-balanced society and thus a well-balanced ecosystem. And we are blessed to have the supervision of our Honorable Vice Chancellor, Professor Anil Hassan sir, for the same. Now, for presenting the vote of thanks, I would like to request the convener of today's program, Professor Salahuddin sir, to kindly come over. Thank you. Thank you, Saria. یہ بہت ہی بہترین. میں بےحد شکر گزار ہوں ہمارے سرپرستان کا کہ جب سائنٹسٹ ایک سوشل سائنٹسٹ سے ملتا ہے نہ صرف سائنسی مراحل کو سوچتا ہے بلکہ دنیا کی خوبصورتی اس کو برقرار رکھنے کے لیے انسانیت اور انسانیت والا وہ دل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. تو ایک ایسے خواب کو ہم یہاں سے لے کے چلتے ہیں, عہد کرتے ہیں کہ ہمارا ہر وہ عمل نہ صرف ہمارے لیے ہوگا بلکہ ہمارے ماحول کے لیے بھی بہتر ہوگا. اس کی شروعات اسکول آف سائنس نے کی. میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ظاہر کروں کہ جب بھی کانفرنس ہوتی ہے کئی پروموٹنگ میٹیریلز پبلش کیے جاتے ہیں, پوسٹرز, بینرز. ارے بھائی وی سی صاحب آ رہے ہیں HCU کے, آپ ان کا بینر کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ کئی لوگوں نے کہا ارے بڑے دیوار پہ ہونا چاہیے, یہ تو مین گیٹ پہ بڑی تصویر ہونی چاہیے. میں نے کہا پھر سیاست دانوں میں اور سائنسدانوں میں فرق کیا رہے گا؟ تو یہ کانفرنس بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پیپر فری اینڈ پلاسٹک فری, ناٹ اے سنگل پیپر. صرف یہ 6 پیپرز ہیں جس کو ہم نے پبلش کیا, وہ بھی مہمانوں کے لیے. اس سے ہٹ کر یہاں تک کہ ہمارا سوینئر بھی ای سوینئر, اور ہمارا پوسٹر بھی آپ دیکھیں. کئی جلسے اور کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں, کوئی کانفرنس یہاں پہ وہ پوسٹر نہیں ہمارا, ناٹ اے سنگل پیپر. اور میں ایک بات بتاتے چلوں, بڑکپن ہمارے بی جے راؤ صاحب کی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, یہاں تک کہ ان کو کمیونیکیشن کرنے کے لیے بھی مجھے لیٹر دینے کی ضرورت نہیں پڑی, پھر فون پہ ہی, اور انہوں نے لبیک کہا اور آپ کے آگے آ کر اپنی ہزارہ اس کے باوجود ہمیں وقت دیا. اور وی سی صاحب کا بے حد ممنون ہوں. تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا. ہر دن کانفرنس, ابھی بھی 3 کانفرنس لوگ انتظار کر رہے ہیں. لیکن سر آپ کی سرپرستی ہمیں اور ہمارے مستقبل اور ہندوستان کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگی. تو میں ایک ادباً ووٹ آف تھینک یعنی ہدیت تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں اسکول آف سائنس اور آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے. ہمارے اتھارٹی خصوصاً شیخ الجامعہ صاحب, رجسٹرار صاحب, کسی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکیں, آپ کا بے حد شکریہ. نہ صرف ہمیں آپ کی مدد رہی بلکہ سرپرستی بھی رہی, اور امید کرتے ہیں کہ اسی سرپرستی کے ساتھ ہماری آگے کانفرنس بھی چلتے رہے گی. اور شکر گزار ہوں بی جے راؤ صاحب کا, جو اپنی کثیر مصروفیات کے باوجود انہوں نے وقت نکالا, ہماری دعوت کو قبول کیا, اور اتنے بیوٹیفل خطاب سے. میں آپ کو ایل میں جب آپ کی تھی تو میں نے الومنائی دیکھی کہ ارے کوئی حیدرآباد سے ہے, میں بھی وہیں تھا تو مجھے خوشی ہوئی. پھر دیکھا حیدرآباد میں بھی کہا عثمانیہ, پھر کہا ارے ایک تو نظام کالج کا لڑکا. تو میری خوشی کا اندازہ نہ رہا, بنا کسی میں اس کے سر سے وجود کیا. اور سر سے ہمارے شیخ الجامعہ صاحب نے بھی انکریج کیا کہ وہ میرے اچھے دوست ہیں, آپ ضرور انہیں بلائیں, بے حد خوشی ہوگی. شکریہ سر. اور ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا پروگرام صرف 1 یا 2 اشخاص سے نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک فوج ہوتی ہے. تو میں اپنے اسکول آف سائنس کے تمام ساتھیوں کو,
तदरीसी, गैर तदरीसी अमला और खुसूसन रिसर्च स्कॉलर्स। सस्टेनेबिलिटी की हालत ये देखिए कि आमतौर पे अनाउंसमेंट टीचर करते हैं, ये दो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं। These are the two research scholars, Saria Nomana in zoology and MSc and MSc physics. तो देखिए हमारे अपने तलबा हैं, सस्टेनेबिलिटी की एक अच्छी सी मिसाल यहीं पे। और इस प्रोग्राम को चलाने के लिए डीडी एडिटोरियम के लिए मैं डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर साहब और हमारी खुसूसन आईएमसी टीम जिसने प्रोग्राम को बहुत ही मौसर बनाने में बेहद मेहनत की, इंजीनियरिंग सेक्शन, गार्डनिंग सेक्शन और इकबाल साहब हमारे इंजीनियर सेक्शन के इंचार्ज, उन्होंने भी बहुत, और आप तमाम का खुसूसन दूर दूर से शहर में इस मौजू को सुनने आया। लेकिन मैं कहता हूं कि आप दोनों साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी मेहनत जो रही रंग लाई। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे राव सर ने कहा कि इन दो लड़कियों को देखकर उन्हें यकीन हो गया कि मुस्तकबिल के लिए अच्छे साइंसदान हैं, तो क्यों ना हम इन दो साइंटिस्टों को एक छोटा सा हदिया तशक्कुर सर और हमारे शेख जामिया साहब से दिलवाए। वो दो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने तासुरात शेयर किए थे। मैं चाहता हूं हमारे चीफ गेस्ट साहब और हमारे शेख जामिया साहब दोनों उन दो लड़कियों को मानू की जानिब से एक छोटा सा हदिया तशक्कुर पेश करें। प्लीज ले आइए, कोई वो नहीं, देयर इज नो फॉर्मेलिटी इन इट। आ जाएं भाई। तो लास्ट वीडियो सुनिए भाई, लास्ट वीडियो पे तुम सुनो। अरे भाई जोरदार तालियों से इसकी वो हिम्मत अफजाई हो। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अगले साल आप भी आए, स्टेज से प्राइज लें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ ये जलसा अब इख्तिताम की तरफ पहुंचता है। इसके बाद चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होने वाली है और एक ही मिनट का क्लिप जो हमारे और आपके ज़मीर को झंझोड़ दे। हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे क्या फराइज है, मैं चाहता हूं आईएमसी टीम से एक छोटा सा क्लिप 1 मिनट का आपकी नजर में, वही वोट ऑफ थैंक और वही हमारा मकासद है। प्लीज। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर। ये चल चल। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे। हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे। हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। हिंदुस्तान चले। चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। और ये अजीम हिंदुस्तान की जिम्मेदारी आप और मुझ पे सब पे आयद होती है। मुश्किलात तो रहेंगी, जब चलते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आएंगी।
हम सब मिलजुल कर इन मुश्किलात का साथ शाना बशाना रहकर एक अजीम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की जानिब कदम उठाने के लिए यहाँ से अहद करते इस कॉन्फ्रेंस से चलें। और ये कॉन्फ्रेंस यहाँ इख्तिताम को पहुँचती है। इसके बाद चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह होगा। और बेहद शुक्रिया। और एक बात मैं कहते चलूँ, जैसे प्रोफेसर अहमद कमाल साहब ने अपने खिताब में बताया, हैदराबाद वो शहर था जिसे नदी, खूबसूरत नहरों के बारे में जाना जाता था। सिर्फ हमारी लालच ने, हमारी इंडस्ट्रीज ने हमारे इन खूबसूरत नहर और नालों को क्या बना दिया। आज हुसैन सागर से आप गुजरें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमें कतई नाउमीद नहीं होना है। अहमद साहब, कमाल साहब का ये पैगाम था कि हर साइंटिस्ट इस तरफ सोचे कि फिर से उस अजीम और खूबसूरत हैदराबाद की तरफ हम अपनी काविशें, अपनी साइंस को एज ए टूल इस्तेमाल करते हुए उसके हल को तलाश करने की कोशिश करें। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारा हिंदुस्तान और सारी कायनात में तमाम मुश्किलात हैं। कोई लड़का भूखा ना सो जाए, कोई किसान खुदकशी ना करे, कोई मुश्किल हालात ना आए और अमन कायम रहे सारी दुनिया में। इस बात का अहद करते हुए हम इस कॉन्फ्रेंस से चलते हैं। तो शुक्रिया। अगर मैं किसी फर्द का नाम भूल भी गया हूं तो सबका शुक्रिया अदा करता हूं इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही जलसे के इख्तिताम के साथ मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। गुजारिश करूंगा कि आप सभी अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। कौमी तराना पेश किया जाएगा। हुब्बुल वतनी होने का सबूत फराहम करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।